Hello everyone, स्वागत करुछि Sugam Academy को. So in this class we are going to discuss about some questions from Unit-1 and Unit-2 Microeconomics second paper, that is core paper 8 fourth semesters. So there are some short questions which we are going to discuss in this class. So let's begin the class. So first question is, what is perfect competition market? So perfect competition market, as we have studied, perfect competition market is the market in which there are large number of buyers and sellers, where the products are homogeneous and there is a uniform price. That is the perfect competition market. Then what is pure competition market? तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रू जदि आम परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट ता सहित परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ए दुईटी जिनस को जदि आम काटिदेवा एलिमिनेट करदेवा ताहले विल गेट द प्योर कंपटीशन मार्केट. सो इफ वी एलिमिनेट द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक द परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, देन विल फाइंड द प्योर कंपटीशन मार्केट. तो दुईटी जिनस आम एलिमिनेट करिथाउ. गोटे हूँ परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट, ता सहित हूँ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स. माने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को आउट नॉर्मलाइज करबा पई प्योर कंपटीशन मार्केट यूज होता है. व्हाट इज शटडाउन पॉइंट? शटडाउन पॉइंट कौन? शटडाउन पॉइंट इज प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ओके, सो प्राइस सब बेले जदि ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है सेते बेले गोटे फार्म प्रोडक्शन करिथाए. If price is less than average variable cost, then the firm stop production or shut down. से जगह तार प्रोडक्शन बंद करि थाए. तो या आम शट डाउन पॉइंट कही था. डायग्रामेटिकली जदि आम देखा, दिस इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट. तो यही पॉइंट जो जगह इंटरसेक्ट करी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, दैट इज द शट डाउन पॉइंट. So next is, what is break even point? Break even point माने कौन? When total revenue is equal to total cost, that is the break even point. जिते बेले total revenue total cost सहित समान हुए, और we can say the average revenue is equal to average cost, that is the break even point. Okay, जो आम normal profit आम ताकू कही था. जिते बेले ये जगह एवरेज ए आर इज इक्वल टू एम आर जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रहता है, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, जो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. तो ब्रेक इवन पॉइंट है जीरो प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट टाइम रे हमें ब्रेक इवन पॉइंट पाई था. व्हाट इज इनवर्स सप्लाई फंक्शन? इनवर्स सप्लाई फंक्शन, इट इज द ऑपोजिट ऑफ द सप्लाई फंक्शन. तो सप्लाई फंक्शन हो सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, माने प्राइस टा इन्फ्लुएंस करे सप्लाई को. एटा को जदि ऑपोजिटली जदि हमें लिखिबा कि प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ सप्लाई, देन दिस इज कॉल्ड इनवर्स सप्लाई फंक्शन. दिस इज द इनवर्स सप्लाई फंक्शन. सो हियर इन द इनवर्स सप्लाई फंक्शन, प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई. देन व्हाट इज प्रॉफिट? सो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू रो डिफरेंस को हमें प्रॉफिट कही था. तो प्रॉफिट केते बेले मैक्सिमम होता है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज द हाईएस्ट. एट दैट पॉइंट प्रॉफिट विल बी दी हायर. जिते बेले टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट भितर डिफरेंस अधिक होता है, सेते बेले प्रॉफिट अधिक होता है. देन व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस? सो प्रोड्यूसर surplus is the difference between the total revenue minus total variable cost. ये जगह हमें फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर न था. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रोड्यूसर सरप्लस. प्रॉफिट रे टोटल कॉस्ट माने वेरिएबल कॉस्ट ता सहित फिक्स्ड कॉस्ट इनक्लूड होता है, माइनस करा हुए टोटल रेवेन्यू रू. किंतु प्रोड्यूसर सरप्लस रे हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करि था. सो ऑलवेज दिस प्रोड्यूसर सरप्लस विल बी ग्रेटर देन प्रॉफिट. प्रोड्यूसर सरप्लस प्रॉफिट ठारू सब बेले अधिक होता है, कारण फिक्स्ड कॉस्ट को ये जगह इनक्लूड करा हुए ना, माइनस करा हुए ना. व्हाट इज द कंडीशन फॉर सडन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? तो सब मार्केट रो सही सेम कंडीशन रहता है, सब शॉर्ट रन रे हो कि लॉन्ग रन रे. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू marginal cost and the MC
cuts MR from below. तो ये दुईटी कंडीशन रही है. This is first and this is second. Marginal revenue must be equal to marginal cost, and marginal cost curve cuts MR from below. This is the condition for short-run equilibrium. Then what is zero profit? Zero profit is also known as the normal profit. When total revenue is equal to total cost, this is called zero profit, or we can say average revenue is equal to average cost. Average revenue is equal to average cost. जो आम ब्रेक इवन पॉइंट पाई था, that is the zero profit. What is economic rent? Economic rent कौन? Economic rent माने होची नेचुरल रिसोर्सेस जहाँ भी सब रही एक्स्ट्रा अर्निंग जो मिलूँ नेचुरल रिसोर्सेस रू, that is economic rent. So because of scarcity पाई माने जिते दरकार ताठू कम रही आमर रिसोर्सेस, तो से इकोनॉमिक रेंट देखा मिली था. माने जिते अर्निंग मिनिमम रहा कथा ताठू यदि अर्निंग यदि अधिक हो गोटे फैक्टर्स दैट इज इकोनॉमिक रेंट. दैट कैन बी फ्रॉम लैंड, लेबर, कैपिटल. ओके, नॉर्मली जनकर वेज हो सपोज 150, किंतु जदि हाईली क्वालिफाइड जदि अच्छी 1000 टंका से इनकम करुच्ची. ओके, 1000 टंका इनकम करुच्ची जदि हाईली क्वालिफाइड अच्छी, किंतु नॉर्मली वेज हो 150 टंका. तो एक्स्ट्रा अर्निंग जो पाइला माने पाखापाखि 850 टंका जो एक्स्ट्रा अर्निंग पाइला, दिस इज इकोनॉमिक रेंट. जेहेतु हाईली क्वालिफाइड रो अवेलेबिलिटी कम अच्छी से तार वेज अधिक रोचे. सो दैट इज द इकोनॉमिक रेंट. एक्स्ट्रा अर्निंग जो फैक्टर्स मानक मिलूँ दैट इज इकोनॉमिक रेंट. What is the condition for long run equilibrium of firm in perfect competition market? तो perfect competition market रे long run equilibrium रा condition कौन रही? This LMC will be LAC is equal to MR. This is the condition of long run equilibrium in perfect competition market. जदि diagrammatically जदि हमें देखिबा, इटा होची हमर LAC, this is LMC, and this is minimum point एटा सब टच करिवो. This is MR. This is the long run equilibrium. What is Edgeworth box diagram? So Edgeworth box diagram जोटा में वेलफेयर थ्योरी मान कर पढ़ी थिले, Edgeworth box diagram रे Pareto efficiency देखिया पे. So Edgeworth box diagram is a box diagram in which the satisfaction of two individual can be shown. दुई जन इंडिविजुअल रो सैटिस्फैक्शन आम देखे पारि तो एजवर्थ बॉक्स डायग्राम रे, किंबा दुईटी गुड्स रो प्रोडक्शन को आम देखे पारि तो एजवर्थ बॉक्स डायग्राम रे. सो एजवर्थ बॉक्स डायग्राम इज द डायग्राम इन विच द सैटिस्फैक्शन और इंडिविजुअल और इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू पर्सन कैन बी सीन. व्हेन द वेलफेयर और सैटिस्फैक्शन ऑफ वन पर्सन इंक्रीजेस, द सैटिस्फैक्शन ऑफ अदर डिक्लाइन्स. ये टाइप रो बॉक्स डायग्राम होता है. ये आम इंडिविजुअल ए रो नहीं था, ये इंडिविजुअल बी रो. इंडिविजुअल ए रो इंडिफरेंस कर्व ये टाइप होता है, कन्वेक्स होता है. इंडिविजुअल बी रो कनकेव होता है, ओपोजिट. ए मझे आम गोटे कंट्रास्ट कर्व पाई था. सो दिस इज द एजवर्थ बॉक्स डायग्राम. व्हाट इज पेरेटो ऑप्टिमालिटी? पेरेटो ऑप्टिमालिटी माने कौन? सो पेरेटो ऑप्टिमालिटी आर द पॉइंट्स इन द कंट्रास्ट कर्व वेयर द वेलफेयर or the satisfaction of the individuals are maximized. Pareto optimality हो जे सबू पॉइंट कंट्रास्ट कर्व रो जोठी इंडिविजुअल ए रो ता सहित इंडिविजुअल बी रो कौन है जे वेलफेयर मैक्सिमाइज है. दैट इज द पेरेटो ऑप्टिमालिटी. ऑल द वेलफेयर पॉइंट्स और वी कैन से द एफिशिएंसी पॉइंट आर द पेरेटो ऑप्टिमालिटी पॉइंट. व्हाट इज पेरेटो इम्प्रूवमेंट? पेरेटो इम्प्रूवमेंट माने कौन? जोटा मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन बा मैक्सिमम वेलफेयर दो नाही, दोटा जी पेरेटो इम्प्रूवमेंट पॉइंट. माने आमे टिके एक्सचेंज करिकी गुड्स रो जदि सैटिस्फैक्शन बढ़ाई पारले, दैट इज द पेरेटो इम्प्रूवमेंट पॉइंट. सो ऑल द पॉइंट्स वेयर वी कैन इंक्रीज सैटिस्फैक्शन और मैक्सिमाइज वेलफेयर, दैट इज पेरेटो इम्प्रूवमेंट पॉइंट. जो जगह आम सैटिस्फैक्शन बा वेलफेयर को इंक्रीज करि पारिबा, दोज आर द पेरेटो इम्प्रूवमेंट पॉइंट. नेक्स्ट इज द कंट्रास्ट कर्व. कंट्रास्ट कर्व एटा जो
image diagram में देखिले this is the contract curve. So what is contract curve? Contract curve is the curve of combination of different quantities of two individuals, okay, which is Pareto optimal. All the points in the contract curve are Pareto optimal, which means the welfare of both the individual are maximized. से जगह maximize है contract curve माने A point रु B पर्यंत जहाँ भी सब point अच्छी सब point को यदि हमें जोड़ी दबा will find contract curve, and all the points in the contract curve are Pareto optimal, which means the satisfaction or individual of or satisfaction or welfare of the individual are maximized. That is the contract curve. Next question is, what is the condition for general equilibrium in pure exchange economy? यदि pure exchange economy अच्छी से जगह condition हो जे marginal rate of substitution x for y of individual A will be equal to marginal rate of substitution xy of individual B. So this is the condition of general equilibrium in case of pure exchange economy. Next is, what is the condition for general equilibrium in production? तो production पे general equilibrium होची marginal rate of technical substitution of labor for capital of good X will be equal to marginal rate of technical substitution labor for capital of good Y. This is the condition for general equilibrium in production. What is first welfare theorem? First welfare theorem कौन कहूँ कि जिते भी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स अच्छी आमर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे all the points are Pareto optimal. Okay, first welfare theorem सेटा कहूँ माने जहाँ भी हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पाइबा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे सबू पॉइंट हम Pareto optimal. That is the first welfare theorem. So the equilibrium point what we get in perfect competition market is Pareto optimal. Then what is second welfare theorem? Second welfare theorem, it talks about all the Pareto optimal points can be achieved in perfect competition market only. जदि केवल perfect competition market रही ताहले automatic कौन हबो Pareto optimal we can find. That is the second welfare theorem. Okay, माने फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम कौन कहूँ जेते भी आमर परफेक्ट कंपटीशन रे जेते भी इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलूची सब होची Pareto optimal. सेकेंड वेलफेयर थ्योरम कहूँ Pareto optimal हेबा पई परफेक्ट कंपटीशन रा आवश्यकता रही. ओके माने जदि Pareto optimal है दैट ओनली पॉसिबल इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ओनली. जदि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अच्छी ताहले ही Pareto optimum हो पारिबो. That is the second welfare theorem. Next is, what is production possibility curve? So production possibility curve is the combination of two goods which an economy can produce with given level of resources. So this is the production possibility curve. Good X and good Y हमें नहीं जो तो इस जो combination माने अच्छी this combination of two goods with given resources which an economy can produce. गोटे economy तार लिमिटेड रिसोर्स भितर दुई प्रकार द्रव्य कॉम्बिनेशन माने से प्रोडक्शन करि पारिबो. दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1 and unit 2. So here are some long question also. The characteristics of perfect competition market, short run equilibrium, long run equilibrium. Okay, so these are the short type question. ता सहित किछिटा आमर मैथमेटिकल क्वेश्चन मध्य अच्छी जोटा को आम प्रैक्टिस करि परिबा. ओके, सो दीज आर दी सम मैथमेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1 and unit 2. ता सहित फिल ऑफ द ब्लैंक्स किछिटा रही. ओके, सो दिस क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन लिंक. डिस्क्रिप्शन लिंक रे सब क्वेश्चन अवेलेबल रहिबो. ताको आम प्रैक्टिस करबा. एते भी जदि प्रैक्टिस करदेबा ताहले बहुत बढ़िया मार्क आम सिक्योर करि परिबा. So this is about the question discussion from Unit 1 and Unit 2, Microeconomics.